Hello student, welcome to MDC Learning. So in today's video we are going to cover T by Become topic from module number 1. Now in last lecture I have explained you what are the rationale to start policy 1991, and in this video we are going to cover what type of a reform took place by policy of 1991. So there are two questions in chapter number 1 of module 1. First is the rationale and second is the reform. Exam point of view, it is very important concept, so please listen this video carefully. So what type of reform took place when new industrial policy introduced in 1991? So number 1 reform is industrial sector reform. Okay, as we know very well, the industries was totally under control by government. There were many rules and regulation imposed by government. So the industrial development of a country influenced by industrial policy resolution of 1948 to 1956. In 1948 to 1956, one resolution made by government to make development in industrial sector, and that development became more and more when policy of 1991 has introduced. Now what type of reform took place? So it helped to build a strong and diversify industrial sector. Diversify मतलब पहले हम कुछ लिमिटेड कंपनी पर ही फोकस करते थे. नाउ वी आर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ गुड्स, वेरियस डाइवर्सिफाई, अलग अलग तरह की कंपनियां सेटअप हो गई है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म टुक प्लेस बिकॉज ऑफ पॉलिसी ऑफ 1991. नंबर 2, these are the sub point of industrial sector reform. So what type of reform took place in industrial sector? Now we will do in a detail. So number 1 reform is the abolition of industrial license. Abolition means hatana. As we know very well, before policy of 1991 there were a number of rules and regulation imposed by government on industrial. The license was compulsory for them, but at present when policy of 1991 came, that time except 18 industries remaining, all were license free. Only 18 industries were compulsory to take license, and after a growth, now there are only 5 industries those who have take a compulsory license from the government when they start a business, such as alcohol, cigarette, hazardous chemical, electronical, space, defense equipment needed compulsory license. So what the point wants to say, whenever policy of 1991 came, that time in industrial sector the number 1 reform is that they have abolished and they have reduced the license compulsory for all the industries except 5. मतलब 5 इंडस्ट्रीज़ के अलावा 5 इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना कंपलसरी है. जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, बाकी सब फ्री है. Next is permitted foreign investment and technology. Previously FDI and foreign investment was not allowed in our country, and it was allowed but on very less percentage. After policy of 1991 we have allowed FDI and FPI up to 51% in industries, and it is also became 100% in many industries. मतलब हमने foreign investment को भी allow किया. Next is reduce the role of public sector. Okay, as we know very well, before policy of 1991 all the sectors were government, so there were various type of corruption, then various type of inefficiency, then costs were very high, many problems were there. As we know, example of electricity, previously electricity was under control by government, and because of that there were huge amount of loss government used to face. So what the point wants to say, in many sectors the role of government has decreased, the privatization took place. See, the policy of 1991 specially based on 3 element, that is LPG, liberalization, privatization and globalization. मतलब फ्री करना, गवर्नमेंट को प्राइवेट करना और ग्लोबल हो जाना, मतलब इंटरनेशनल हो जाना. These 3 are the main element of a policy of 1991. So what the point wants to say, as policy of 1991 came, that time the role of public sector has reduced. कितना? 17% से 3%. Now there are only 3 industries which are reserved for the government. मतलब सिर्फ अभी 3 इंडस्ट्रीज ऐसी है जो गवर्नमेंट चला सकती है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें प्राइवेट हो गई है. सच एज एटॉमिक एनर्जी विच इज़ रन ओनली बाय गवर्नमेंट, केमिकल, रेलवे, these are, and core industries are iron and steel, air transport, etc.
Next is removal of MRTP Act. MRTP means Monopoly Restricted Trade Practice Act. It is one of the act which was imposed by government to reduce the activities of industries. Under this act, many industries were not allowed to expand their business and they were not allowed to make investment more than 1,000. But this act was reduced after policy of 1991, and on place of this, new act has introduced, that is known as the Competition Act 2002. So under Competition Act 2002, now industry is allowed to make investment more than 300 crore, and they can make a production of goods and services more than 1,000 crore. So what the point wants to say, जैसे जैसे पॉलिसी 1991 की आई तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हुए, लाइसेंस हटा दिए गए, देन व्हाट यू कॉल इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया, देन गवर्नमेंट का रोल हटाया गया, आफ्टरवर्ड MRTP एक्ट को हटाया गया. सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस टुक प्लेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. स्टूडेंट ऑन अ शॉर्ट नोट ऑल्सो दिस कैन कम कि राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इन पॉलिसी 1991. तो आपको एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा. नंबर 2 रिफॉर्म इज पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म इन एंड डिसइन्वेस्टमेंट. पब्लिक सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुए. सो public sector played important role in India, as we know very well. Government sector always playing very important role in our country. They generate employment, it help to get foreign currency, export and import, like various type of facility we used to get from the government sector. But as we know very well, government sector suffered from huge amount of loss, then due to the corruption, then fall in efficiency, they are not work in efficient way, then it always create a deficit in a budget. So गवर्नमेंट सेक्टर क्या हो रहा है, एक तरह से दिवाले में और कर्जे में चल रहा है. From 1991 there were disinvestment and in public sector was allowed. Disinvestment in a public sector was allowed means disinvestment का मतलब होता है सपोज कि previously many industries were forced to make investment in a government sector. पहले क्या होता था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स किया जाता था. तो जिसकी वजह से जो कंपनी का दिवाला निकल रहा है उसमें प्राइवेट कंपनी को फोर्स किया जाता था कि आप अपने पैसे लगाओ. बट नाउ आफ्टर पॉलिसी ऑफ 1991 द गवर्नमेंट अलाउड इफ़ वॉट एवर मनी यू हैव इन्वेस्टेड, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, तो वो इन्वेस्टमेंट आप विड्रॉ कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. सो आफ्टर पॉलिसी ऑफ 1991 डिसइन्वेस्टमेंट अलाउड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज नंबर 3 रिफॉर्म, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म. ट्रेड के मामले में और कैपिटल फ्लो के मामले में क्या रिफॉर्म हुआ. नंबर 1 इज लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट. प्रीवियसली द इम्पोर्ट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट देर वॉज अ लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट. लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम दिया गया इम्पोर्ट को. नाउ वी कैन इम्पोर्ट द गुड्स एज वी रिक्वायर्ड, बट देर वॉज सम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोज ऑन अ गुड्स लाइक अ कंज्यूमर गुड, जैसे कि जूस, खाने पीने की चीज़ें, ये जब हम मंगाते हैं बाहर से तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है. अदरवाइज ऑलमोस्ट गुड्स आर फ्री फ्रॉम द इम्पोर्ट ड्यूटीज़. Number 2 is a reduction in the tax structure. Before policy of 1991, our tax structure was very high. We can say it was nearly 300% to 150%. Then 2004 and 5 में 20% हो गया. देन इन 2007 एंड 8 इट बिकेम 10%. सो जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो भी चेंज किया गया. नाउ डेज वी आर फॉलोइंग GST. सो GST टैक्स स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम 0% to 28%. Next is promotion of export. Even to promote export, government started to give various type of subsidies, incentive, tax में reduction किया गया, subsidies दी गई, then rate of interest कम किया गया, so export can be increased. Next, change in exchange rate. As we exchange rate means the value of our currency against foreign currency. Previously the exchange rate value was decided by RBI, so RBI involvement was there. But now after policy of 1991 the exchange rate decided by the demand and supply of that rate in the market. मतलब मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड की जाएगी. नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट इंक्लूड बोरोविंग एंड लेंडिंग एंड ऑल. सो पहले क्या था, हम 50% ही बोरोविंग एंड लेंडिंग या फिर हम लोग 50% ही फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते. बट आफ्टर पॉलिसी ऑफ 1991 द करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बिकेम 100%. अभी हम 100% क्या कर सकते हैं,
लैंडिंग एंड बोरोविंग को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन medical student, those who are medical student, or we can say the people those who are going out for the studies, वो थोड़ा सा ही पैसा फॉरेन करेंसी में पहले कन्वर्ट कर सकते थे, बट आफ्टर पॉलिसी ऑफ 1991 नाउ दे आर एबल टू कन्वर्ट देयर domestic currency into foreign currency on 100%. Next is liberalized capital inflow. The government allowed capital inflow in a form of FDI and FPI. FDI means foreign direct investment and FPI means फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई मीन्स जब हम किसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एफडीआई। जब हम किसी बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एफपीआई। सो आफ्टर पॉलिसी ऑफ 1991 गवर्नमेंट अलाउड कैपिटल इनफ्लो। इनफ्लो मतलब बाहर के जब लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल इनफ्लो। सो आफ्टर पॉलिसी ऑफ 1991 गवर्नमेंट अलाउड एफपीआई एंड एफडीआई। कुछ सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में 49% है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में 51% है। इवन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक दे गॉट 100% एफडीआई एंड एफपीआई फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग वर ऑल्सो अलाउड। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग मतलब व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम अ फॉरेन बैंक या फॉरेन के किसी पर्सन से जब हम मनी बोरो करते दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बोरोविंग बेस एलिजिबिलिटी लिस्ट। सो दिस वर ऑल्सो अलाउड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज, ये हो गया तीसरा रिफॉर्म। फोर्थ रिफॉर्म है फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सा रिफॉर्म है। अभी हमने मॉड्यूल नंबर 4 पूरा पढ़ा है। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, देन मनी मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। तो ये टॉपिक आप अगर उस मॉड्यूल नंबर 4 से भी लिखोगे देन नो इशू, बट इन शॉर्ट वी विल डू। After policy of 1991, the government appointed committee under the chairmanship of Narasimha Rao, and they have submitted various report. And as per the report, various type of reform put forward in a financial sector. So the number 1 is banking reform हुआ। बैंकिंग रिफॉर्म में SLR रेट कम की गई। इट वॉज बिकेम 19.5% in 2018, but because of COVID-19 the SLR rate has reduced by government and today's SLR rate is 18.5. Lowering of CRR. CRR rate generally imposed from 3% to 15%. So in 1991 it was 15%, 2003 it was a 4.5%, 2018 it was 4%. But because of COVID-19 now recent CRR rate is 3%. Now question is arise, what is SLR? SLR means statutory liquidity ratio. इसका मतलब होता है कोई भी कमर्शियल बैंक को RBI के बैंक में जितना परसेंटेज बोला उतना परसेंटेज का सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे कमर्शियल बैंक RBI के अंडर कंट्रोल में रहे। CRR rate used by the RBI when they want to decrease money supply इन द मार्केट। सपोज़ कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे रहा है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो RBI क्या करेगा, CRR रेट बढ़ाएगा, जिसकी वजह से किसी भी कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल टर्नओवर का कुछ परसेंटेज RBI में जमा रखना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड CRR रेट। रिसेंट CRR रेट इज़ 3% बिकॉज ऑफ COVID-19 द RBI हैज़ डिक्रीज। Then deregulation of interest rate. Previously, the rate of interest was decided by the RBI for all the financial institution and bank. But after policy of 1991, they have allowed all the bank and financial institute. They can decide rate of interest as per their institution and as per their wish or the demand and supply in the market. Next is introduction to prudential norm. मतलब कुछ नॉर्म्स का मतलब होता है रूल एंड प्रूडेंशियल मतलब ऑफिशियल। So many official norms and rules and regulation made by RBI or after policy of 1991 regarding bad loan. Bad loan we know, अगर जैसे 3 महीने हो जाते हैं फिर भी कुछ अता पता नहीं EMI का, that is called bad loan. Then assets, NPA assets जो जैसे stress loan, bad loan, ये सब क्या होते हैं, non performing assets. So in regarding the banking sector, whatever rules and regulation will be there for the bad loan, whatever rules and regulation there will there for the stress loan, वो सब डिस्कस किया गया। रिसेंटली वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ COVID-19. इन COVID-19 बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस many people are not able to pay their EMIs on time, so the government has introduced a moratorium system, so that will also come under in this. Next is introduction of a capital adequacy norm.
कैपिटल एडिक्यूसी नॉर्म का मतलब होता है ईच एंड एवरी बैंक हैज़ टू कीप सम अमाउंट ऑफ मनी इन देयर बैंक इवन दो पीपल आर डिमांडिंग इन अ फॉर्म ऑफ लोन। इसका मतलब होता है बैंक कैन नॉट गिव एंटायर मनी टू द पीपल इन अ फॉर्म ऑफ लोन। अगर सपोज बैंक हैविंग द टर्नओवर ऑफ 12 crore, then out of 12 crore 6 crore they can give as a loan and 6 crore they have to keep in their bank, so that the people, those who demand money anytime and those who want to withdraw money day to day, that they can easily do it. So as per the policy of 1991, each and every bank has to keep minimum 8%, and today's data says that each as per the Basel third meeting, each and every bank has to keep 10.8% of their income in their bank only. So जो लोग डेली का डेली ट्रांजेक्शन करते हैं या जो डेली का डेली विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हो. Then access to capital market. Capital market means the market where lending and borrowing of medium and long term fund take place. That is called capital market. So after policy of 1991, many nationalized bank. As per the old data, there were total 19 nationalized bank, and as per the today's data, there are total 12 nationalized bank. So previously nationalized bank were not allowed to access in a capital market, but nowadays nationalized bank has allowed to access in a capital market and they can raise the fund. Next is entry of a new private sector bank. Okay, many new banks are allowed to enter into the market. So there are nowadays, along with the public sector bank, many private banks are also increased. Next is freedom of operation. Each and every bank can extend their offices, their branches and their services. Even many cooperative bank can be also expand their branches and services. Next is special recovery tribunal. We have learned in a last videos of a module 4 that government has introduced special tribunal, or we can say Indradhanush Yojana. Under this, the people, those who are not paying loan and those who are not paying EMIs on time, so this type of cases they have to enter in a one tribunal. It is a one type of court. तो जहाँ पर बैंक जो भी कस्टमर उनको लूट रहा है या जो द कस्टमर दोज आर नॉट पेइंग लोन ऑन अ टाइम, तो उसके अगेंस्ट में केस किया जा सकता है. सो दिस टाइप ऑफ things took place after policy of 1991. Next is capital market में क्या रिफॉर्म हुआ. So the very important concept that is SEBI has introduced in a capital market. As we know very well, money market under control by government, or RBI, and capital market it is under control by SEBI. SEBI is a Security and Exchange Board of India, that is called SEBI. So SEBI has introduced in a capital market which control capital market. Nowadays each and every activity of capital market under control by SEBI only, and SEBI not only hold the interest of the customer, but they also find out how capital market work. Nowadays screening information about the security and board has allowed. अगर आप चर्चगेट में जाओगे तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक मार्केट कैसे चल रहा है, इसका पूरा का पूरा स्क्रीन पे आप देख सकते हो. सो मेनी टाइप ऑफ रिफॉर्म टुक प्लेस बाय गवर्नमेंट आफ्टर पॉलिसी ऑफ 1991. और इसका पूरा अगर आपको लिखना है पॉइंट्स, तो मॉड्यूल नंबर 4 में जो मैंने रिफॉर्म करा है कैपिटल मार्केट के, उसका हेडिंग आप ऐड करो. एक्सप्लेनेशन नो नीड, सो दैट ये जो पॉइंट है, सो दैट आई कवर्ड मॉड्यूल नंबर 4 फर्स्ट, बिकॉज कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म वाला पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. Then you can also add insurance sector reform. You can also add money market reform. तो जो भी हमने मॉड्यूल नंबर 4 में पढ़ा है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है. इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म, एज यू नो वेरी वेल, इंश्योरेंस मोस्ट ऑफ वी यूज टू टेक to avoid the risk which can arise in the future. And what type of reform took place in the insurance market, that I already explained in the module number 4. So student, what now you have to do for point number 1, you will follow this video only. Then for point number 2, same video. Point number 3, same video. But for point number 4, financial sector reform like capital market, money market and insurance market, इसके लिए आप लोग मॉड्यूल नंबर 4 रिफ़र करो. जो भी रिफॉर्म मैंने वहाँ पर करवाए हैं, दैट सेम यू हैव टू राइट.
So this is enough answer, you can say. From PPT also you can write down. So this answer will be enough for you. This is very important question, exam point of view. So chapter number 1 of module number 1 has over. I hope so you all are doing study. So just write down all the points in your notebook, so you will able to maintain the notes. So stay blessed, stay at home, and please do study. Don't waste your time. This is a very important time, especially for TY BCom. God bless you. Be happy.